So, welcome dear students, and in today's class we are going to study history of Egypt till the fall of Hosni Mubarak. Again, it is like Egypt being the one of the oldest civilizations of the world. To finish it off in 1 hour is very difficult, but we'll go through it in a very cursory way ताकि थोड़ा बहुत हमें knowledge base मिल जाए कि what was the entire Egyptian uprising about. But before that, we have to first understand कि Egypt important क्यों है? Why should we study about Egypt? और Egyptian history क्या है? So जैसे कि आप जानते हैं कि Egyptian history um, has various kinds of complexities of understanding it, but because most of the civilizations have started जहाँ पे भी river रहा है वो Indus Valley civilization हो वो Mesopotamian civilization हो यूफ्रेट्स और टिग्रिस पे या फिर वो आपका Egyptian civilization हो जो नाइल रिवर पे शुरू हुआ था तो इजिप्ट जो है as you can see from this particular image here is the Mediterranean Sea यहाँ इसका पोर्ट सिटी है अलेक्जेंड्रिया जहाँ पे सी फूड बहुत ही अच्छा मिलता है डियर एंड अलेक्जेंड्रिया इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स लाइब्रेरी लाइब्रेरी के नीचे उनका म्यूजियम है विच हैज ऑल द आर्टिफैक्ट्स एंड स्कल्पचर्स preserved in a very very immaculate manner. So if you ever go to Egypt, so definitely visit Alexandria because of its historic structure. In fact, the father of geography, Eratosthenes, he was born in Libya, but he worked as a librarian in the Alexandrian library. And वहाँ पे he had discovered the circumference of Earth, and he was also into music, poetry, and much more. फिर यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द नाइल रिवर विच गोज थ्रू ये सुदान इथियोपिया होते हुए फिर जाती है और यहाँ पे रेड सी है दिस इज अ रेड सी एंड अगर इफ यू लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अफ्रीका सो इजिप्ट इज ओवर हियर इन कंपैरिजन टू टुनीशिया इट इज बिगर ह्यूज एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए इजिप्ट बहुत बहुत ही जाना जाता है वो फैरो का टाइम हो वहाँ के पिरामिड्स हैं टेम्पल्स हैं और उसका हिस्ट्री और कल्चर बहुत ही ज्यादा रिच है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो एंड वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है द करेंसी विच इज यूज्ड इन इजिप्ट इज द इजिप्शियन पाउंड एंड यहाँ का जो पूरा जो जीडीपी है दैट इज रूल्ड प्राइमरली बाय टूरिज्म एग्रीकल्चर एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सो जो सुएज कनाल फिर आगे जाके बनता है दैट बिकम्स अ क्योंकि सुएज कनाल में जो भी शिप ट्रैवल कर रही है उसको टैक्स पे करना होता है टिकट लेना होता है तो दैट became a very major source of revenue for the Egyptian government and during the pandemic it was obviously an issue because all of this was at a standstill तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि who were the pharaohs then तो एंशंट इजिप्ट में जैसे हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पैराडाइम्स द फर्स्ट बीइंग एंशंट द सेकंड बीइंग मिडीवल द थर्ड बीइंग मॉडर्न तो pharaohs जो थे वो एंशंट इजिप्ट में दे वर द रूलर्स द मोनार्क्स उनको सुप्रीम अथॉरिटी थी ओवर ऑल द मैटर्स जो पॉलिटिकल हो रिलीजियस हो कल्चरल हो उन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे एंड just like any case of monarchy, it was believed that pharaohs had divine or semi-divine powers, and the universal balance of life, which they called as math, that was under the control of the pharaoh because of his or her divine power. You can see that they have this beard kind of and a snake, and I will tell you what is the reason behind it. So the pharaohs ruled Egypt from 310 BC till the end of the Ptolemaic dynasty in 30 BC. और उस समय इजिप्ट बहुत सारे अलग अलग डायनास्टीज में डिवाइडेड था और हर डायनास्टी का अपना राजा अपना फैरो उस समय होता था जो फेमस फैरोज रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट जोसर जो 2670 बीसी में था उसने स्टेप पिरामिड बनाया था सक्कारा में विच इज द ओल्डेस्ट पिरामिड इन इजिप्ट खुफू वाज द नेक्स्ट वन
जो 2589 से लेके 2566 BC तक था, उसने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा. सो गीजा इज जस्ट नेक्स्ट टू कायरो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इट. तो जो पिरामिड्स ऑफ गीजा है वो खुफू ने बनाया था. इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस पिरामिड इन इजिप्ट. बट देयर आर मेनी पिरामिड्स इन इजिप्ट एक्चुअली. Many. Hatshepsut was one of the first female pharaohs in Egyptian history, जिसके टाइम पीरियड के दौरान देयर वाज पीस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी, बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी हुए थे, और उसने टेम्पल बनवाया था देर एल बहरी का. तूतनखामुन, जिसका टूम्ब भी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था in 1922 and it was intactly discovered. उसने बहुत सारे पिरामिड्स और उसके टूम में भी बहुत सारे ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स मिले थे. Then one of the other popular one is Ramses II, who was one of the most powerful pharaohs, and he saw the great expansion and construction of Egypt, and अलग अलग टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए थे. तो टेम्पल्स का मतलब यहाँ पे हिंदू टेम्पल नहीं है, बिकॉज दे हैड अ पॉलीथीस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिपिंग विच आई विल टेल यू अबाउट. बट लेट अस सी फर्स्ट कि फैरो का जो इंटायर आउटलुक है. सो यू सी द इजिप्शियंस प्लेस्ड द स्नेक ऑन द फोरहेड of the pharaoh. इसका symbolism था. Like even in Hinduism, we have something called as the Kundalini energy. Do you know? Have you heard about it? There are many yogic schools that teach about Kundalini energy, which is in our body. No, ma'am, haven't heard. What is it? It is a certain kind of life energy that we have. So you know that we have 7 chakras, right? So when all the energies of these chakras are inclined, and then the Kundalini is of a human being is set up, like it's evolved. As of now, it is believed that those who do not practice Kundalini yogic meditation have not been able to understand what kind of energy it is. So you will see a lot of yogic mystics who can just levitate and everything. तो वो कुंडलिनी एनर्जी से ही होता है. एक दो बार मैंने भी कोशिश की थी. Like I joined a school of yoga which was for Kundalini energy. So they teach you, and it's actually very difficult. You have to just sit for an hour in the very starting phase, sit for an hour without any kind of support, palthi marke, and you have to raise your hands like this and just meditate. And if there is a signal, or if there is a indication that your Kundalini jagrit ho rahi hai aapki, so your palms will initially get very warm and then they will slowly and slowly get very, very cold. But it is very difficult to sit like this for an hour without any support. And that too, like a straight back and everything. So that was my experience. But anyway, so Kundalini energy and this chakra basically, जहाँ पे बिंदी भी लगाते हैं Hindu women, it is for your third eye chakra, which is related to knowledge. So यहाँ pharaohs had that kind of, and the kingdom at that kind of time also had that kind of narrative. Now, what were these mummies that you can see? These are caskets, जिसके ऊपर बहुत ही elaborate paintings की गई है. And these paintings I saw in Cairo and the other pyramids also, the cave paintings which are inside. And you can see it is very immaculate and very, very meticulous. And these are not from artificial plastic paints. These are from paints which are derived from vegetables or fruits. And फिर बहुत ही इनका elaborate system रहा है. और ये कास्केट का ऊपर का पार्ट है, एंड देन द बॉडी इज केप्ट लाइक दिस, और फिर वो कास्केट का नीचे का ये पार्ट है. तो दीज वर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ ममीज. लेकिन ये ममीज होते क्या थे, एंड व्हाट वाज द सिंबल, और क्यों, व्हाई टू डू दिस? So basically, these were preserved bodies of ancient Egyptians, but not any Egyptian. So specifically, maybe the pharaoh or someone from the elite class, right? उसके body को
After removing the internal organs, उसके बॉडी को प्रेजर्वेटिव से ट्रीट किया जाता था और लिनन बैंडेज में रैप किया जाता था. And it was because the Egyptians believed in afterlife, that there is a journey after your death. Now, what kind of afterlife it was, I don't know. But so the body has to be preserved so that the soul can travel in the afterlife properly. तो ये ममिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता था, इसमें काफी दिन लगते थे एंड काफी वेल्दी और इलीट मेंबर्स का ही होता था, नॉट ऑफ द कॉमन पर्सन. एंड ये प्रेजर्वेशन का तरीका, एक रोम में भी एक ममी का सिस्टम अभी हाल फिलहाल पाया गया है. विथ द एवोल्यूशन ऑफ टाइम ममिफिकेशन का प्रोसेस भी इवॉल्व किया, और कैसे कैसे आप प्रिजर्व कर रहे हैं बॉडी को, उसका पूरा तरीका भी चेंज हुआ. और जो बरियल का कास्केट होता था वो काफी इलेबोरेट होता था, तो उसमें ज्वेलरी डालते थे, फर्नीचर का आइटम भी कुछ कुछ डाल देते थे, फूड ऑफरिंग भी डाल देते थे, ताकि इंडिविजुअल को आफ्टर लाइफ में वो सारी चीजें मिले. और crystals had a very important aspect during this time. जैसे for example, this is citrine crystal, and this is amethyst crystal. So ये जो crystals हैं, इनको लिक्विड फॉर्म में डाइल्यूट करके पूरे बॉडी को कवर किया जाता था. प्राइमरली जेड. Jade is of green color. I have it, but I don't have it now. No, this one kind of. So this is jade, kind of lightish greenish, but because my background is green, it will. So lightish greenish ये jade है. तो इसको इन सबको लिक्विड फॉर्म में डाल के दे यूज्ड टू पोर ओवर द body because it was believed that crystals had magical properties, or they would protect the body and the soul for in the transition to the afterlife. So minerals ka kafi, like, all these crystal minerals were extensively used, and they were also adorning the bodies of the pharaohs and the way they dressed and everything. तो बहुत सारे ममीज मिले हैं टूम्स में, पिरामिड्स में, एंड काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश की है थ्रू दीज ममीज, कि कैसे एवॉल्व हुआ और क्या प्रोसेस विथ द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हुआ. अब रिलीजन क्या प्रैक्टिस किया जाता था? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ pharaohs जो डोमिनेंट रिलीजन था वो पॉलीथीस्टिक था, जिसमें बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस थे. देयर वर मेनी. The ancient Egyptians believed that gods controlled every single aspect of life. And that is why math, which is the balance between order and chaos of the universe, that is controlled by God themselves and goddesses themselves. So as you can see, the Egyptian society was very feudal also. Pharaoh सबसे ऊपर था, then came your priests and nobles, then came your traders, artisans, shopkeepers, scribes. Scribes का मतलब होता है, जैसे for example, if someone is visually challenged, तो they hire a scribe to write or to take the exam for them. तो scribe is someone who is writing the paper, right? तो उसमें printing press बना नहीं था. We are in 3000, 2000 BC. Printing press will come in Germany in 14th century. So everything was written elaborately by these scribes, the holy books or whatever they followed. It was written. The cave paintings were done by these scribes. उसके बाद आपके farmers और herders आते थे, and end में आपके unskilled workers आते थे. Unskilled workers में आएंगे आपके जैसे gatherers, hunters, all of that. तो ये एक systematic division था, और it was dynasty politics कि एक pharaoh का बेटा ही next pharaoh बनेगा because of the supposed purity of the bloodline. तो बहुत सारे gods थे इजिप्ट में, and Ra was the most important. Ra was the sun god, and it was believed that Ra had created the world. फिर Osiris, the god of the afterlife, who was, because they believed in life, afterlife, rebirth,
So Osiris was the god of afterlife who had the power of resurrection and rebirth, creating resurrection and rebirth for the pharaohs and everyone. Isis was the goddess of motherhood and fertility, who believed it was believed that she protected women and children. Horus was the god of the sky and kinship, who was believed to be the son of Osiris and patron god of all the pharaohs. तो आज भी अगर आप if you go to tour the pyramids of Giza, so if you have a tourist agent who knows about the history of these places, they will tell you about these gods, and they will also tell you the method of worshipping. And Egypt may something which is mm, very popular is essential oils. Now, what are essential oils? Essential oils जैसे lavender है, jasmine है, rose है. So उनका पूरा natural extraction, they are very strong actually. Like I have seen the variation of it in India, but these were like literally pure, 100% pure quantity of oil. And they believed that these oils, because they believed in the chakra system somehow, which is very interesting. So every oil had to be applied at a different chakra of the human body, and then you go and worship, and there were timings, of worshiping. They would tell you of when the time to worship inside the pyramid was and what was the practice. They also at that point of time believed in rituals and sacrifices and animal sacrifices also. So as you can see, there are so many different gods. Now look at the why I included this picture, because I want you to have an understanding of how their gods look, right? Normally, there is a personification of gods. We have personified gods in the human image. But here, they had various kinds of attributes. जैसे Ra, the god of the sun god, उसके ऊपर ये sun का symbol है. Isis is here. Osiris is here. तो अलग-अलग god का अलग-अलग features था. Specifically the upper facade of it. And all of them were worshipped depending on what is their power and what is their entire paradigm in which they will be worshipped. इजिप्ट का लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है. दिस इज द स्पिंक्स. तो इजिप्ट का लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रहा है, जो इट्स मोर देन 5000 ईयर्स. दुनिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है. एंड जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, लाइक यू कैन नॉट कवर दिस एंटायर एरिया बाय फुट. इट्स इम्पॉसिबल. So you either have to know horse riding, so you can hire a horse and you can do horse riding, or you have a horse cart or a camel cart, or you can hire a camel. So it is so huge. It is like more than 1,000 acres, and you cannot travel by foot. So I remember that the camel that I rode on, his name was Michael Jackson. So the pyramids of Egypt these are groups of ancient monumental structures जो western side of the Nile River पे हैं and Cairo के ही आसपास हैं. They were built as tombs or the resting place for pharaohs और उनके जो consorts और priests और ये सब थे. So we are talking about कि ये pyramids बने कब? So it was somewhere around 2686 BC to 1650 BC. जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है. नॉर्मली पीपल कम टू सी द पिरामिड्स ऑफ गीजा इटसेल्फ. लेकिन ऑल ओवर कायरो, इफ यू गेट अ गुड टूरिस्ट एजेंट, यू विल सी दैट ऑल ओवर कायरो देयर आर स्मॉलर पिरामिड्स. देयर आर पिरामिड्स जो इतने छोटे हैं दैट यू कैन गो ऑन टॉप ऑफ देम एंड स्टैंड एंड टेक अ पिक्चर. सो उस तरीके से है जो खूफू ने बनाया था. एंड ये most of them are 450 feet tall, and they are made with 2 million blocks of limestone. अब limestone का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर होता है. जो caves होते हैं, caves या तो limestone से बने रहते हैं, नहीं तो डोलोमाइट से बनते हैं. और वो इसीलिए caves बन जाते हैं, अंदर से वो टूट जाते हैं ताकि a passageway becomes, is because they decay with water penetration. तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका
अगर ये लाइमस्टोन से बना हुआ है तो अभी तक करोड़ नहीं हुआ है. And these are huge blocks, like if you see, these are huge blocks of limestone rocks. और 80-80 टन का एक ब्लॉक होगा. तो वंडर हाउ व्हाट वाज द आर्किटेक्चरल मार्वल कि इसको इस तरीके से बनाया गया. कैसे पूरा सिस्टम हुआ होगा कि एक के ऊपर एक रखा गया होगा, एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, और कैसे ये टाइम के साथ करोड़ भी नहीं किए. जैसे you can see here, right? So your height will be something like this. If you are here, so your height will be something like this. That's it, right? तो यहाँ कुछ कुछ आप देख रहे हो, corrosion है, ये सब it's because of limestone rocks, and these are huge rocks. मतलब फोटो में it's not doing justice, but when you go and see, it's huge, these building blocks of the pyramid. तो इसके अलावा गीजा के अलावा भी बहुत सारे पिरामिड्स हैं. पिरामिड ऑफ खफरे है, पिरामिड ऑफ मेनकौर है, बहुत छोटे छोटे पिरामिड्स हैं जो और किंग्स और क्वींस और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए है. पिरामिड्स के नीचे केव्स हैं, केव्स में पेंटिंग्स हैं. तो इजिप्ट में अराउंड अभी तक 100 डिफरेंट पिरामिड्स हैं. एंड गीजा इज द मोस्ट प्रिजर्व्ड वन. बाकी सबका उतना प्रिजर्वेशन नहीं है. तो when you go back to 3100 BC during the time of Pharaoh, तो Pharaoh मेनेस ने पूरे के पूरे इजिप्ट को यूनिफाई किया था. बहुत ज्यादा वहां की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, बट the pharaohs loved creating monumental architecture and they had a centralized form of government. And उनका राइटिंग का, आर्ट का, मेडिसिन का, मैथ्स का बहुत सारा they had the influence on it. Specifically writing. So if you go to near just outside the pyramids of Giza, so it is a lot of shops are there. So where you can buy carpets and you can buy Egyptian paintings. Now Egyptian paintings, the real Egyptian paintings, they are made on now they are made on handmade paper, very tough and very very immaculate in precision, and they are not from artificial paint. तो एक पूरा कल्चर है इजिप्शियन पेंटिंग को इन्फ्लुएंस करके उसको प्रिजर्व करने का. एंड यू बाय देम एंड एवरीथिंग. द मोस्टली यू कैन आल्सो बाय थिंग्स इन डॉलर्स ओवर देयर. इट इज इजीली इंटरचेंजेबल. एंड यस, वन थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि इजिप्ट में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बख्शीश. जस्ट एज वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बख्शीश, तो वहां पे भी बख्शीश का कॉन्सेप्ट है. कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है, वो टूरिस्ट एजेंट ही है, यू हैव पेड हिम बट ही विल स्टिल नॉट गो बिकॉज उसको और बख्शीश चाहिए. एंड देन wherever you're going and buying, or even you are shopping somewhere, so वहां पे भी बख्शीश चाहिए. आप कैमल राइडिंग जिससे करवा रहे हो उसको भी बख्शीश चाहिए after what you have paid, and they start with $100. I'm like, because that is what charge the foreigners for camel riding. I'm like, $100 पता भी है कितना है? तो ये है. अब इजिप्ट का कोलोनाइजेशन क्या हुआ? तो बहुत सारे पावर्स ने इजिप्ट को ऑक्यूपाई किया था. जैसे पर्शियंस ने किया था, ग्रीक्स ने किया था, रोमन्स ने भी किया था, फिर अरब्स ने किया. तो ड्यूरिंग द मिडिल एजेस इजिप्ट वाज रूल्ड बाय ममलुक्स. अब ममलुक्स क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दिस वाज अ मिलिट्री कास्ट ऑफ टर्किक एंड कर्केशियन स्लेव्स. स्लेव्स का मिलिट्री कास्ट था जो 13th सेंचुरी में पावर पे आ गए थे. एंड ऑटोमन एम्पायर जो है वो 1517 में इजिप्ट को फिर कंट्रोल किया, एंड इट रूल टिल 300 years टिल दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ममलुक्स एक मिलिट्री क्लास था स्लेव सोल्जर्स का. एंड ये 13 से 16 सेंचुरी तक इजिप्ट को रूल किए. इनिशियली इनको बाहर से लाया गया. दे वर नॉट इंडिजिनसली इजिप्शियन. इनको अयूबिद डायनेस्टी, जो बगल की डायनेस्टी थी, 12th सेंचुरी में उनको लेके आई टू सर्व एज स्लेव सोल्जर्स एंड बॉडीगार्ड्स. धीरे करके ममलुक्स जो है उनका पावर बढ़ने लगा, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा इन दी अयूबिद कोड. एंड बाय 1250 दे सीज द एंटायर कंट्रोल ऑफ इजिप्ट. और उन्होंने अपना ही ममलुक सल्तनत वहां पे बना दिया. एंड इनका मिलिट्री पावर बहुत ही ऑडेशियस था. They had political skill, diplomacy, military might, all of it. Why is it important? Because slavery, we know that it has a deep history.
The history of slavery is very deep and very starting from the Greek civilization, Roman civilization, and before. But this was the first slave caste, and I'm using the terminology of slave because initially slaves were always seen as victims, right? But Mamluks changed the entire narrative of soldier slaves. So ye the aapke Mamluks, and this is how they came, and this is how ये मुनादी इसको बोलते थे, द पर्सन हु यूज्ड टू बीट द ड्रम्स एंड एवरीथिंग एंड टेल कि आज का ताजा खबर क्या है एंड एवरीथिंग. तो और या फिर कुरान के वर्सेस या ये सब बता रहे होते थे. अब ममलुक्स ने अपने टाइम पीरियड में इजिप्ट में बहुत सारी स्टेबिलिटी लाई और उसके बाद बहुत सारा आर्किटेक्चर भी उन्होंने क्रिएट किया, जैसे मॉस्क बनाए, मदरसा बनाए, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई. और 16th सेंचुरी तक जब ऑटोमन एम्पायर आया तो फिर ममलुक सल्तनत खत्म हो गया. और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका हार्डली 100 to 100 years का हिस्ट्री था, ममलुक का आर्किटेक्चरल मार्वल में इजिप्शियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है. नाउ हियर कम्स मोहम्मद अली पाशा. इन 19th सेंचुरी इजिप्ट को मॉडर्नाइज किया था मोहम्मद अली पाशा ने, जिन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. Now, who was he? Muhammad Ali Pasha, he was an Ottoman Albanian military leader, and Egypt has always been ruled by military. Always. That is one pattern that you will see. So, Ottoman Albanian military leader the, he became the governor of Egypt and Sudan in 1805. उनको founder of modern Egypt भी बोला जाता है because he introduced a lot of modernization and reformation efforts. और जब पॉलिटिकल टर्मोइल ऑटोमन एम्पायर का चल रहा था, specifically, in terms of control and monopoly, that is when he became powerful. उनको ऑटोमन सुल्तान ने अपॉइंट किया था कि इजिप्ट में जाओ, वहां पे रिबेलियन हो रहा है हमारे खिलाफ, क्रश इट. वहां वो जाके खुद ही इजिप्ट के मिलिट्री लीडर बन गए और पावर को कंसोलिडेट कर लिया. एंड ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड ऑल ऑफ इट. इजिप्ट उनके कंट्रोल में बहुत बड़ा सेंटर बन गया ट्रेड एंड कॉमर्स का. सो जैसे इजिप्शियन पोर्सलेन, इजिप्शियन पेंटिंग्स, इजिप्शियन कारपेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के पास है तो वहाँ का मतलब आई हैव लिटरली सीन मैंगोज एंड ऑरेंजेस विच आर दिस बिग which are being sold in the Egyptian market. वहाँ का cotton, Egyptian cotton is very, very famous. Egyptian cotton also was a major trade item. पाशा ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, अबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड किया उसने कि नहीं होगा स्लेवरी, पब्लिक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बनाए, बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, सूडान को अपने कंट्रोल में ले लिया. He also played a key role in the Greek War of Independence, which helped to establish his reputation as a powerful and influential leader. अब यहाँ पे Suez Canal है. So the British actually colonized or took control of Egypt specifically because of the strategic interest of Suez Canal. क्योंकि अगर Suez Canal नहीं था तो if they want to go to Bombay, तो वो पूरा इस तरीके से उनको जाना पड़ता, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन होके. यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, साउथ अफ्रीका का जो कॉर्नर है, वहां पे बहुत सारे पायरेट्स रहते थे. तो कोई भी अगर वेसल आ रही है, ट्रेड शिप आ रहा है, तो यहाँ इट वाज इम्पॉसिबल कि जिंदा यहाँ से जा पाओगे. बहुत लूट अटैक ये सब चीज होता था. तो ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपका मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को लिंक करते हुए इंडियन ओशन से मुंबई पहुंच जाओ. छोटा भी रास्ता था एंड आप पायरेट से भी बच रहे हो. ना ही यहाँ करीबन आइलैंड्स है, ना ही केप ऑफ गुड होप है. तो सुएज कनाल को कंट्रोल करने के लिए दे टुक कंट्रोल ऑफ दिस. इजिप्ट में पपेट मोनार्की एक तरीके से ब्रिटिश ने इंस्टॉल करके रखा हुआ था. जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया तो ब्रिटिश ने वहां पे अपने ही मोनार्क स्टैब्लिश कर दिए जो इजिप्शियंस थे. वो अब्बास द सेकंड, उसके बाद उसका ही वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल हुसैन कामिल, और सबसे एंड में ये था
फारूक। हुसैन कामिल का डेथ 1917 में हो गया, फिर उसका भाई अहमद फवाद न्यू किंग ऑफ इजिप्ट बना। फुआद जो था वो बहुत ही बड़ा लॉयल सपोर्टर था ब्रिटिश का। 1936 में फिर फुआद का बेटा फारूक took over the throne, and as you can see, like the attire is also like the red coat army of the British. बहुत सारी डिफिकल्टीज इसको यहाँ पे फेस करनी पड़ी, and he was seen widely as a weak and ineffective ruler who was heavily influenced by the British. So today's class